नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं बच्चे? पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नई क्लास में नया कोर्स, सब कुछ नया नया। और भाई ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस समय स्थिति थोड़ी परिस्थिति खराब चल रही है, लेकिन घर बैठ के पढ़ने का बहुत कुछ मेथड आजकल है भाई। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में। This is my YouTube channel, Sanskrit Classmate Easy. It is made for you only and for your help. I have many smart tricks, many innovative methods, interesting and interactive techniques to teach you Sanskrit. If you have subscribed my channel, very good. If not, please subscribe it and please share it with your classmates also. And if you want to join my live classes, then please join Unacademy. There is regularly daily one class at 4 p.m. also. At 4 p.m. for class 10 Sanskrit. Okay, join Unacademy. You will get the link in the description box. So let's begin. Today we are learning English to Sanskrit translation of Lang Lakar. We will learn Lang Lakar, past tense Lang Lakar. Okay, let's move forward. चलिए बढ़ चलिए आगे। ये देखिए, difficulty level is slightly higher, from easy to difficult. Okay, the first sentence is very easy. अब मैं श्रीनगर गया, I went to Srinagar. Okay, I went is lang lakar, and lang lakar there are pratyas. We use a before, we put a before dhatu, and we will use pratyayas ta tamna, ahatam ta, ma ava ama. Ta tamna, aha visarg, only visarg, ahatam ta, ma ava ama. These are pratyayas to make verbs of lang lakar. Okay, if the dhatu is pat, we will write apathat, apathatam, apathan, apathan, ta tamna. Apatha, apathatam, apathat. We will write again apathan. Apatham, apathav, apatham. These are 9 houses. My Navgraha Pujan. Okay, this is Pratham Purush, Madhyam Purush, and then Uttam Purush. Tvam, Yumam, Yuyam joins with apatha, apathatam, apathat respectively, and aham, avam, vayam. Aham, apatham, avav, apatham, avam, apathav, and vayam, apatham. And rest of the noun words and pronoun words, they will join with ta, tam, na. Okay, now start. I went to Srinagar. I is Kartripadam, went is Kriyapadam, and Srinagar is Karmapadam. Then we will write aham. First of all, join aham with Kriyapadam. Ma. We will use aham will join ma. Why? Because this is 7th house. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 7th house. Aham, and we will use agacham with it. Agacham. Like this. And Karm Padam is Srinagaram. Aham Srinagaram agacham. Okay. The girl smelt a flower. Smelt is ghra dhatu. We will use ghra dhatu. Girl is in singular number, pratham purush. So we will use pratyat with girl. Kanya. Okay. Kanya. Ajigran. Ghra dhatu, the root will be ajigrat, ajigratam, ajigran. So Kanya is in singular number, then we will write ajigrat, sungha, smelt. And flower is object, karmpadam, pushpam, Kanya, pushpam, ajigrat. Oh, please, there is some spelling mistakes. Okay, we will erase this also. Yes, again. Kanya, Pushpam, Ajigrat. When there is a before, after Mahaland, when there is a after Mahaland, you will write Mahaland. You will not write like this. Pushpam. You will not write like this. Mo Anuswara Sandhi. This is called Mo Anuswara Sandhi. If there is Mahaland and there is Jigrati. मान लो ऐसे लिखा होता Jigrati. J is Vyanjan, consonants.
then ma halant will become an anuswar. But if there is any vowels after ma halant, we will write only ma halant. Okay. The boy plucked the flower. बच्चे ने फूल तोड़ा. Plucked. Trut dhatu. We will use trut dhatu for it, and the roots become trotayati. So in lang lakar it will be atrotayat. The boy is a singular number, so we will write balkah, first house. We will take kriya from first house. Ta. Atrotayat. Atrotayat. Okay. Flower is again कर्म. बालकः पुष्पम अत्रोटयत्. फूल तोड़ा. पुष्पम अत्रोटयत्. Okay. Ram ने सांप को मारा. Ram killed a snake. Ram is कर्तृपदम in singular number. Snake is कर्मपदम, and killed mri dhatu. It is mri dhatu, and in lat lakar it is marayati, and lang lakar it is amarayat. So we will write Ramah amarayat. First of all, join कर्तृपदम with क्रियापदम. अमारयत. तो इससे गलती होने की चांस कम हो जाएंगे. नो मिस्टेक्स. सर्पम. सांप को सर्पम. It is an object. Ramah sarpam amarayat. Okay. Let's move forward. Okay. There are some more sentences. कंस मथुरा का राजा था. Again write 1 2 3. It is 1 2 3 9 houses. 4 5 6 and 7 8 9. कंस is singular number. मथुरा का it is षष्ठी विभक्ति. Raja is nripah. Atha is as dhatu lang laka. Kans was king of Mathura. Kansah. मथुरा का. मथुरा ending. मथुरायाः षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग. मथुरायाः. नृपः. नृपः is also in singular number. Why? Because Kansa is also in singular number. Asit. As dhatu lang lakar, it will be asit. Asti is lat lakar. Asit is lang lakar, and bhavishyati is lit lakar. Prahlad remembered God. Remembered. Bhaj dhatu. Bhaja. Bhaj dhatu. And Prahlad is Kartripadam. Remembered is Kriyapadam. And Prahlad is singular number. So Kriyapad will be also in singular number, and God is Karma. Prahladah. Abhajat. Abhajat will be the Kriya. Abhajat in singular number. Okay. Ishwaram. Ishwar ko. Ishwaram. You will write like this. ठीक. समझ में आ रहे हैं ना बच्चों को? बहुत अच्छा. पशुओं ने जल पिया. The cattle drank the water. Drank. पा धातु. Cattle. पशुओं. It is in plural number. Third house. Pashvah. Pashvah is in plural number. Apiban. Why? Because Pashva is in plural number, so we will use verb from plural number also. Again, only from third house. Apiban. Drank. Pashvah apiban. क्या पिया? जलम. पशवः जलम अपिबन. तुमने हाथ धोए. धोना शल धातु और प्रप्लक्षल धातु. प्रप्लक्षल. प्रक्षालयति. प्रक्षालयति. You washed your hand. It is in lang lakar. So we will write a before dhatu. We will put a before dhatu. A pathat. So pra and a, this will make pra. Tumne. मध्यम पुरुष एक वचन. Oh my God. त्वम हाथ धोए. हस्तम प्रक्षालयत या प्राक्षालयत? प्राक्षालयत. Why? Because pra plus a will make pra. दीर्घ संधि and shal धातु है. prakshalayat. There is a mistake. Sorry. Please ignore it. And I will write again. Prakshalayat. Shalda prakshalayat. Prakshalayat or prakshalayah?
there is something wrong in this. पहचानिए क्या गलती है? What is the mistake? I have written shall dhatu. Then why I have write this a with after sh? It should be prakshalayah. Prakshalayah. Why? Because we will write verb from fourth house. Ta tamna ahatamta. So we will write prakshalayah. Again, Ram ne pair dhoye. Ram washed his feet. Ramaha, it is from first house, so it will be prakshalayat. 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 We will write like this. Feet. इसके लिए क्या लिखा जाएगा? पैर होते हैं दो, तो लिखा जाएगा पादऊ. एंड यू विल राइट, यहाँ पता नहीं चला हाथ धोए, एक हाथ है कि दो, अगर दो हैं तो लिखेंगे हस्तऊ. हस्तऊ, इसीलिए पादऊ. ठीक, थोड़े थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, थोड़े थोड़े डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ रहा है. और हमको ऐसा करना भी पड़ेगा, नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना? इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करना पड़ेगा. तूने वृक्ष को देखा. You saw a tree. Again you will try to write like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये houses नवग्रह पूजन, इसको ध्यान रखेंगे. You is त्वम, fourth house. त्वम वृक्ष को देखा, ट्री को देखा. वृक्षम ऑब्जेक्ट द्वितीय विभक्ति. वृक्षम देखा. दृश्य धातु लंग लकार, इट विल बी अपश्य. त्वम वृक्षम अपश्य, ऐसे. यू. राम ने रावण को मारा. मारने के लिए मृ धातु, आई टोल्ड यू बिफोर. एंड राम ने इस कर्तृपदम, रावण को इस कर्मपदम. इट विल बी लाइक दिस. रामः मारा. रामः प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन, सो वी विल यूज अमारयत. अमारयत लाइक दिस. और यहाँ पर रावण को रावणम, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक. रावणम अमारयत. पक्षी चहचहा रहे थे. The birds were chirping. चहचहाना is कूज. कूज धातु होती है, इसके लिए कूज धातु है, कूज. Birds are plural number from third house. खगाह. खगाह. अकूजन. It's a very simple sentence. Akujan, like this. Khaga is plural number from third house, so the verb will be from third house. Ta tam na. So we will write akujan. The cattle were running. Cattle's bahuvachan, plural number. Pashvah, from third house only. Okay. Pashva. Dhav dhatu, running. Run, for run we will use dhav dhatu. So we will write dhavanti. No, adhavan. Why? Because it is in lang lakar, word running. Adhavan. You should be very careful while reading a sentence, है ना? अभी तो सारे लंग लकार में, but exam में one will be from lang lakar, other will be from lot lakar, the third one is from vidhi ling lakar. So you should be very 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 careful to recognize the verb. बच्चे खेल रहे थे. The boys were playing. Boys बहुवचन, playing is क्रीड धातु. So we will write बालकाः. It is from third house, बालकाः. Then ta tam na, we will write अक्रीडन. अक्रीडन. अभी तो सारे वाक्य एक जैसे हैं, लट लकार में, लंग लकार में, लंग में, लोट में, लेकिन जब इसका मिक्स आएगा तो हमको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा while reading the sentence and recognize the lakars. Okay. Were running, were chirping, killed, saw, it is all lang lakar, past tense. तो ये हो गया भाई लंग लकार के अनुवाद, इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन. जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट थी, आपकी इच्छा थी कि मुझको इंग्लिश में भी संस्कृत ट्रांसलेशन सिखाना चाहिए. तो आई एम नॉट वेरी habitual of making as videos in English medium, so if there is any mistake, please ignore it. Okay. Now see here. This is the playlist. These are playlist of my videos. There are more than 350 videos, of class 10th and for class 9th and for Sanskrit for beginners. Okay. So hit this playlist button and you will see all the playlists. There are many more also.
letter writing, quick revision, chitra varnan for 9th and 10th, correction of sentences for 10th only, vachya for class 10, motivational videos for all of you, Shemushi, if you want to read lessons with me, Shemushi class 10, all the lessons are here, and Shemushi class 9, all the lessons are here. Hindi, Anuvad, Bhashik Karya, Anuprayukt Vyakaran, question making, everything is there. And there are some videos for beginners also. There is some basics. I taught some basic Sanskrit and grammar video also. So सब कुछ आपके लिए है. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, इतना तो बनता है ना पढ़ने के बाद कि सब्सक्राइब कर लीजिए. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स एंड प्लीज सेंड योर कमेंट्स. क्या चाहते हैं आप, नेक्स्ट वीडियो किस पे आए, मुझे अवश्य बताइए. तो भाई बस करते हैं, आगे पढ़ते रहिए आप लोग आनंद से. और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा. उसका लिंक इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अनअकैडमी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, देन अगेन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का मेरा लॉगिन आईडी है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं. और मुझे अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन ऑफ माय रेगुलर क्लासेस. सो चलिए अब विदा लेते हैं. आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. पढ़ते रहिए, आनंद से आगे बढ़ते रहिए. बाय बच्चों.